जों दिनै पार्टी सिद्धांत नागै जों खायसे रिमाइंडार लेटार चिठी जों सुइखा दिनै होम मिनिस्टार अमित शाह जी ते दिनै प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी जी ते दिनै जेपी नड्डा दिनै बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट उ कथानो जों चिठी सुइखा दिनै मेमोरेंडम सुइखा ओ कपिनो जों दिनै मुख्यमंत्री नाव जों रिखा दिनै मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जों बनो याफाखा जों अबक दिनै खायसे गोजाम चिठी जे रिमाइंडार जों जत साइमानो दिनै आईपीएफटी पार्टी 2018 इलेक्शन सिगां जों गोबां कक सालायखा बीजेपी सेंट्रल लीडर रबाय इवेन जों मालायखा आजराव दिनै तंमोन होम मिनिस्टार दिनै राजनाथ सिंह जी बने आमालो अ कमिटी खाजाबाय ते जों मालायखा दिनै मोदी जी जों मालायखा प्राइम मिनिस्टार जों मालायखा मालायगै जों बरबाय गोबां कक सालायखा सालायन बिसिंगो बर साखा दिनै त्रिपुरानि समस्यानो त्रिपुरा सरकारनि समस्या नायना बागै बर खायसे कमिटी खानाय कमिटी खाखा आबनो निनि हाई लेवल कमिटी खामानि बिसिंगो आरो जागा सब्जेक्ट दंगो जे दिनै त्रिपुरा सानि समस्या नायनाय आरो सुए दं सुए दंगो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम आबनो नायगिन खायनाय बागै आबनो सॉल्व खायनाय बागै बर खायसे कमिटी खायखा हाई लेवल कमिटी अंडर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ते आ कमिटी रो त्रिपुराव फायखा वाइनि फेगा त्रिपुराव बर दुई बार फायगै जत्त पॉलिटिकल पार्टी रो बाय बर मालायखा बर हियरिंग खायखा आं मइतो मानो जों बरिखा मेमोरेंडम अबे गोबां मानसिनि पॉलिटिकल पार्टी रो आबनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायखा इंक्लूडिंग NGOs आं मइतो मानो जों सादागा प्राय निनि 25 टा ग्रुप इंक्लूडिंग NGOs बर डिमांड बर सबमिट खायखा मेमोरेंडम आरो निनि CPM बो दंगो GNP दंगो कांग्रेस दंगो INPD दंगो जों दंगो हागले गोबां मा पार्टी दिनै हाई लेवल कमिटी रो बर मेमोरेंडम सबमिट खायखा आबन तो yang सुइखा जे हाई लेवल कमिटी जेनेरो गठन खायमानि आबनि रिपोर्ट ताखुन जों मायाखो आबसनो रेनंथु तांगै आ रिपोर्ट दिलें तंखा आबन जों बन क्वेरी खायखा तै अरबिन सुइखा जों रिसेंटली थांनाय जों 2019 कायसे दिनै कायसे फायमानि दिनै 125th amendment bill अब एडिशनल तै कायसा संविधान सुजाकमानि आ 125 amendment bill आबन तैबो जों दिनै स्टेट गवर्नमेंट दिनै काउंसिल अफ मिनिस्टर जों कैबिनेट आबो रेजोल्यूशन पास लायै आबन सपोर्ट के जों रहका आरो जतो साइमानो आबो बय कायसे कमिटी खायजाका आ कमिटी बहिनताबो जों कानाका आबो अलरेडी बर रिपोर्ट सबमिट खायखा आरो भाइना जिनु 125 amendment bill एडिशनल तै आरो भाइना गोबांमा दिनै पॉलिटिकल पार्टी रो NGO रो आबनो मन्थाइ बरखा बर मेमोरेंडम सबमिट खायखा आरो IPF देबो कायसा जों खायखा तो माके ओ कमिटी न मैक्सिमम जों IPF नो आबो जों डिमांड खायमानि आ कमिटी रिपोर्ट बिताबो जों मानियाखो जों खानाका आ 125 amendment bill आबो अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा खायताबो लोकसभा बा राज्यसभा आबो टेबल लंनाय आरो डिस्कशन नांनाय एरपर आबनो पास लायनाय आरो गावमा जों साइमानो जे आबो दिनै एडिशनल बम आरो जों चेंज लायखा जों रिखा आबो दिनै सरकार तरफ থেকে आबो TTC नाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आबो के बम जों रहका तैबो जों आरो नियो साका दिनै सब्जेक्ट दिनै डिपार्टमेंट बारायनाय ताबो तमानि प्राय 43 डिपार्टमेंट आरो लैंड पावर दंनाय डायरेक्ट फंड दंनाय गोबां माबा सब्जेक्ट दं नखलाय 43 डिपार्टमेंट दिना बागसों चिठी सुइखा आमे आबन सुइखा तैबो दिनै आरो लागा दं दिनै सीट बारना बागै TTC अंगमानि परेबो दिनै मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ताबो तमानि 30 टा आरो बिसिं 28 टा इलेक्शन नांगो ते दुइटा गवर्नर नमिनेट खायो आबो जों इनक्रिज बाय रगै जों साका 50 टा सीट आबो दिनै स्टेट गवर्नमेंट नि कैबिनेट आबो जों एप्रूव खायखा अबेखलाय जों गोबां मा आरो जों रहका
abo bhaintabo जों नायसिं दंगो दिनै 125 mm बिल्ड बहर पास होनाय जों नायसिं दंगो abo दिनै डिमान्ड जों जज साइमानो abo पास जों हांख्लाय जों जे ताबाव जे ककबंलाय तुलै माने एडिसि बाय स्टेट गभर्नमेंट सब समय कन्फ्लिक्ट ककबंलाय तम कारणे आरो कोनो क्लियर सुजेक करे aboni जों साका 125 mm बिल्ड जे पास जों हांख्लाय abo स्राय जों abo साइमासिनो aboni बगे जों दिनै abon nayo chini IPD party जों BJP IPD सरकार फाइमिनि परेव जों गोबां सामुख्लायखा abo जों ताबो नायसिङै दंगो abonनो आं दिनै जों सालायनो बिसिंतै जों गोसोर सेथि सुइखा दिनै दारेबा वेलफेयार डिपार्टमेंट तरफ থেকে एज ए मिनिस्टार आं सुइखा दै बोसोन दिनै पार्टी तरफ থেকে बोसोन मेमोरना सुइखा दिनै पार्टी IPFT दै हयदो फाइनेसन दिनै एकी साबजेक्ट नते जों ऐसा मेमोरना सामिट खायखा about through Chief Minister. जों Chief Minister जों बरंमना Chief Minister बिप्लब कुमार देब जों बना बरिखा दै सारे जों दिल्लीयाव पाठर होखा जों साइमानो दिनै पार्टी IPFT जों जत साइमानो जों 2009 हयते जों लागातार आन्दोलन खालाय दंगो जों मुभमेन्ट खालाय दं जों खालाय थांनाय ताबो जों जस्ट इन पेन्डेमिक कोरोना भाइरासनि बागै जों आबनि प्रोटोकल जों मा मानेगो जों सोशल गैदारिं खालायनाया आबनि बागै जों कत जों मुभमेन्ट खालायनाया दिनै पार्टी IPFT youth IPFT तै IWFT तै आर्टिसा जों जत मिलगै दिनै प्राय 8टा ग्रुप दं एलाइड ग्रुप दं जों ओरै सालाय दंगो जों दा पेन्डेमिक रुपाय खांगाय लकडाउन रुपाय खांगाय जों कटर खालाय जों मुभमेन्ट खालायनाय जों जत साइमानो साराति पारबक साइमानो जों IPFT पार्टी जों आतोय दंया जों कक बुसाय दंगो तै जों मुभमेन्ट खालाय दं आबो जों नायसिं दंगो जों दा कोरोना भाइरास पाइखांख्लाय पेन्डेमिक पाइखांख्लाय लकडाउन पाइखांख्लाय जों इमिडिएटली जों सारातिबा जों मुभमेन्ट खालायनाय दिनै सिक्लाराव नायसिं दंगो आबनो आं जतनो साव जे दिनै पार्टी IPFT जों सामंतां दंमानि जों कक साइ दंमानि आबो जनगण साइमानाय जनगण सिनाय साबो गुबै साबो टाटाल आबनो आं साव दिनै बारकुनो बाखाता बायदि दिनै IPFT पार्टी जों ताबो नाहरै दंगो जों दिनै जत जों सालाय दं ताबो जों दिनै पेन्डेमिक कोरोना भाइरास लकडाउन पाइखांख्लाय जों कतर खालाय जों मुभमेन्ट खालायनाय जों संग्राम खालायनाय जों समायटांजाक आबनि बागैनो आं कयनाय जत जों सिक्लारावनो जेराव खाता बायदि ताबो जों जरा नायसिं दङ जराना कक सानाय आबनि बागै जों टाइम टु टाइम तैबो जों सालायखै जोंनि पार्टीयाव जों जेरै लकडाउन पाइखांखाय जों दिल्ली थाङै दिनै जे जों आगे कक सालाय माने दिनै जों जे लेदारबाय जों कम्पिटिशन खायदों माने आबनि जों थांनाय दिल्ली थांनाय तैबो भेरि इन्टारेस्टिं भेरि इम्पर्टेन्ट जों दिनै कैबिनेट हयदो जों एप्रुव कर हका जों पास कर हका दिनै जों पैकेज रना बागै जों आरो प्राय दं दिनै 8,389.71 crore about दिनै 8,000 crore जों रां सांजाक दंगो स्पेशल पैकेज नि बागै आबो जों सायनाय आबो दिनै कैबिनेट हयदो जों एप्रुव खायजाक रेजोल्यूशन पास जाय जों रखजाक पैकेज नि बागै तैबो जों साका स्पेशल ड्राइव दिन ST रावनो ST SC रावनो जों स्पेशल ड्राइव के चाकरि ना बाय जों सालायजाक आबनि बायबो जों दिल्ली थांकक सालायनाय जों दा लकडाउन पाइखांख्लाय जों दिल्ली थानाय ब्रं सानाय दिनै जों जत साइमानो दिनै सिक्लाराव दिनै सिक्ला साराव हाजार लाख लाख जों बेकार चाकरि माइया आबनि बागै जों स्पेशल ड्राइव खालायसिना चाकरि ना बागै आबो जों दाबि खाय दंगो जों लकडाउन पाइखांख्लाय जों सालायजाक जों दिल्ली थाङै आबनथिबो जों सालायनाय ते गोबां इशु दं नो साइथांगा ओ इशु ते जों इमिडिएटली दा लकडाउन पाइखांख्लाय जों दिल्ली थाङै जों नांगा जों मुभमेन्ट खालायनाय ना जों धरना खालायनाय हायखौ जों प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार जों मालायै दिनै जे दिनै नांमानि दिनै इशु रनते जों कक सालायनाय हामबाय थैंक यू मेरे फ्रेंड टुडे स्पेशली I would like to give short briefing press release regarding the recent letter sent to the Home Minister as well as Prime Minister and also Honorable President BJP JP Nadda ji. I have sent 3 letters to them
It is just to reminder the letter which was sent earlier. As you know, BJP IPFT has come to alliance with some sort of agreement. As you know, 2018, we have a series of discussions between BJP and IPFT before assembly elections. We have series of meeting in Guwahati as well as in Delhi. There we have lot of discussion, and also we have given few points. One most important point is the formation of high-level committee under Home Ministry. This was formed. This was constituted before election. In that committee, it was clearly mentioned that the committee was constituted to look after socio-economic and political problem in Tripura state. As a result, the committee was constituted, and committee also came to Tripura. They have visited two times, and we have series of discussion with them. And all the political parties, NGO, have submitted memorandum to the high-level committee. But this committee is still existing, but somehow it was delayed. So we asked several times to the Home Ministry to give us report, that high-level committee report, which we have submitted memorandum with various political parties. So this report is yet to be published. This as we mentioned in the letter. And secondly, very important issues, our state government, the Council of Ministers, have passed the resolution that the Constitution 25th Amendment of the Constitution should be implemented in Tripura. This 25th Amendment Bill, 125th Amendment Bill, is placed in the Parliament, and it was constituted committee, also standing committee, and that committee has submitted the report of the 125th Amendment Bill 2019. This is submitted in the Parliament, so far I know the report, and is to be tabled in both the House, Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. This bill should be tabled, but still now, so far I know that this bill is not a table in the Parliament. The Home Minister, since it is the Home Department taking initiative regarding this 125 Amendment Bill. So I request to the Home Minister, Amit Ji, to look into it and to pass the bill. As you know, Tripura Tribal Autonomous District Council, TTADC, has less power if we compare with other states, other northeast states, like Karbi Anglong, Dima Hazao, Bodoland, Gurkhaland, Khasi Hill District Council. If we compare with this district council, our district council is less power. Everybody knows. If you compare with the Bodoland Territorial Council, Bodoland has got a lot of power, which was given more autonomy, more power. Even they can run and manage colleges and university in district council area, even in Karbi Anglong. So whereas in Tripura, we have a very less power. We can run only up to class 8. This is the main reason why we are always talking about that the people of Tripura has deprived
did not give the power in ADC. Even in Bodoland District Council, now become Bodoland Territorial Region, have a land power, and also they have got the rural development power, RD, rural development. So all these things should be considered even to our district council. So again and again we emphasize that district council should be given more power. And now our party IPFT, since 2009, we have a constant movement, constant demand that district council should be converted, elevated to statehood power, that which we call Triplaland. That's why again and again I emphasize that our district council is less minimum power. So our district council should be given more power and also full-fledged state, that is statehood. These are the core demand of our IPFT party. So this letter today I have sent even to the Prime Minister, Home Minister, and our BJP President, J.P. Nadda ji. It is just a reminder, because this kind of nature of power letter I have sent several times. So again I have remind them, since especially the 125 amendment bill, which is supposed to be tabled in the Parliament, because since last year it was already report was submitted by the committee. Therefore, I again and again request the Home Minister to consider our demand, to consider this amendment bill, so that I think in the near future our district council will get more power, because we know there are conflict between state and the district council, always is there. It's not the first time. Our district council has already run maybe 38 years. So always we talk about that there is a conflict between state and district council. Therefore, once and for all, we want to solve this problem. Therefore, our IPFT has, since 2009, we always demand, our standpoint is to elevate, to create statehood based on district council of Tripura. Thank you.